Lecture number 15, class 8, unit number 2. Topic is real numbers. Exercise 2.9. Students, we will start question number 1. Question number 1 is, which are the perfect cubes? Perfect cubes are those numbers when we multiply an integer by itself 3 times, then we will get this answer of perfect cube. So first part is 512. We will find its prime factors. 512 is divisible by 2, its answer is 256. It is divisible by 2, its answer is 128. सेम हम 2 पर करते जाएंगे, हमारे पास ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे. इनकी अगर हम 3 3 की ग्रुपिंग करें तो हमारे पास ये एक ग्रुप आएगा, 3 ग्रुप्स मिलेंगे. 2 2 4, 4 2 8, यानी 3 टाइम्स 8 आएगा, इसलिए 8 क्यूब हो जाएगा. सो दिस 512 is a perfect cube. Same way, students, we will solve second part 1100. By finding the prime factors of 1100, students, we will get this answer 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 11. After making the grouping, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा और 11 आ जाएगा, जबकि इसमें क्यूब कोई भी नहीं आ रहा. So 1100 is not a perfect cube. Same 3 part is not included in our syllabus, so we will solve fourth part 729. स्टूडेंट 729 के जब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ये नंबर जो है 3 पर डिविजिबल होगा और इसके जब ग्रुपिंग 3 3 फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास 2 ग्रुप्स आएंगे, यानी 3 क्यूब और 3 क्यूब और 3 चूंकि 3 3 9, अगर हम बेसिस को कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर उसकी पावर 9 रेज़ पावर 3 आएगी. 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट दिस आंसर. सो 729 इज अ परफेक्ट क्यूब.